Assalamu alaikum. This is first lecture on physics CSS और इसमें आपके साथ बुक्स शेयर्ड हैं और उन्हीं में से जो पेपर ए है कलीम अख्तर की बुक में आपसे एक जो एक्सपीरियंस भी शेयर किया गया जो सीएसएस टॉपर्स हैं और पास पेपर्स भी अगर देखें तो काफ़ी चीज़ें जो हैं आपकी कलीम अख्तर की बुक से रिपीट होती हैं। इनफैक्ट लास्ट टाइम 2023 में जो न्यूमेरिकल आया है पेपर वन में वो एज इट इज कलीम अख्तर की बुक से है। क्वेश्चन भी एज इट इज स्टेटमेंट में है। बाज़ औक़ात द पेपर सेट रीशफल्स, लेकिन यूजुअली यही रूटीन रहती है। इसलिए फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी कलीम अख्तर की बुक से आउटलाइन को कवर करना है। अभी हम आउटलाइन में भी चलते हैं। आज हम जो देखेंगे वो बिल्कुल बेसिक सा है और पहली क्लास है तो हम इसको बिल्कुल इजी रखेंगे। आहिस्ता आहिस्ता हम उससे पेस अप पे आएंगे, ताकि कुछ जो अभी मजीद दोस्त ऐड होना चाह रहे हैं वो हो जाए और एक रूटीन में चीज़ें चलें। ओके, पहला सिंपल टॉपिक है वेक्टर। एज इट इज़ आपकी आउटलाइन से ये कवर होता है। उसके बाद डायरेक्शन को साइंस, ये लास्ट टाइम जो पीएमएस का पेपर 2023 में आया है उसमें एक क्वेश्चन एज इट इज़ पूछा हुआ, डायरेक्शन को साइंस प्लस स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स कन्वर्जन टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो ये एक मिला के 10 नंबर का सवाल बना हुआ था। एज इट इज़ फ्रॉम दिस बुक। ये तीन क्वेश्चन जो हैं हम इस बुक से कवर करेंगे। बताने का मकसद यही है कि ये आप बुक या तो हार्ड फॉर्म में ले लें, सॉफ्ट फॉर्म में अगर आप इजीली पढ़ सकते हैं दैट इज़ गुड एज वेल। तो इसमें से हमने चीज़ों को कवर करना है। एमसीक्यूज भी मैं आपको साथ साथ गाइड करता रहूंगा और लॉन्ग क्वेश्चन भी पास पेपर से, जैसे मैंने अभी बता दिया कि इसमें से क्वेश्चन 2 और 3 पीएमएस 2023 में आया, जो बिल्कुल रिसेंटली हमारा पीएमएस लास्ट इसी साल, इनफैक्ट आज रिजल्ट आया जो पीएमएस, उसी पीएमएस के जो फाइनल सेलेक्टी हैं उनका आज फाइनल रिजल्ट भी आया। तो इसमें से 2 और 3 और अगर हम आगे चलें वेक्टर प्रोडक्ट वाला आया हुआ है। ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है और एमसीक्यू ज़ाइबा कहीं से भी बन सकता है। ओके, लेट्स मूव टू द वर्क प्लेस। ओके, सो एंड just to add, it will be a discussion based class. I will ask some question and I will be happy अगर आप उसका आंसर दें। ऑडियो में दे सकते हैं, चैट बॉक्स में दे सकते हैं, एज यू फील कंफर्टेबल। दिस इज आवर पेपर वन मैकेनिक्स, एंड मैकेनिक्स में भी हम वेक्टर का टॉपिक, तो ये बेसिकली हमारी आउटलाइन का हिस्सा है जिसमें से ये जो भी मैंने आपको टॉपिक दिए हैं दैट विल कवर द वेक्टर पार्ट। देन वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा, एंड देन द ट्रिपल प्रोडक्ट, एंड देन दीज टॉपिक्स, एंड देन द एप्लीकेशन। और ये आपका पहला चैप्टर जो है एमबीडी की बुक से कवर हो जाएगा। और इसमें से पीएमएस में और सीएसएस में यूजुअली क्वेश्चन आता है। पीएमएस में तो डैम श्योर कंफर्म क्वेश्चन है इसमें से। इनफैक्ट एक साल में 150 क्वेश्चन आए हुए थे, यानी 15 नंबर, 10 नंबर का एक क्वेश्चन और 5 नंबर का एक पार्ट। और सीएसएस में भी लास्ट टाइम इसमें से क्वेश्चन आया, उससे पिछले साल नहीं आया, उससे पिछले साल आया। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस मैकेनिक्स आउटलाइन। ऑलमोस्ट हर पार्ट में से कुछ ना कुछ आ रहा है। ओके, वेक्टर से हम स्टार्ट करते हैं, आपका जो पहला टॉपिक है। और वेक्टर स्टार्ट करने से पहले मैं एक एग्जांपल या एक क्वेश्चन रेज करता होता हूँ कि ये एक बॉक्स है और ये एक पर्सन है ए, और ये इसने इस बॉक्स को पकड़ा हुआ है और फोर्स लगा रहा है। तो क्या आप बता सकते हैं आप में से कोई कि ये बॉक्स किस तरफ मूव करेगा, लेफ्ट और राइट? इन विच डायरेक्शन द बॉक्स विल मूव? सर अगर सिंपली पकड़ा हुआ है तो फिर तो कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए उसकी, राइट? चले, फोर्स लगा रहा सो फोर्स भी डिपेंड करेगा उसकी एप्लीकेशन किधर है, उसको पुल है। भी जी कर जी, सकता है, उसको एग्जैक्टली पुश भी कर सकता है। एग्जैक्टली कि वो फोर्स इस तरफ लगा रहा है या फोर्स इस तरफ लगा रहा है, इट डिपेंड अपॉन दिस। और फिर ही हम बता सकते हैं कि ये बॉक्स किस तरफ मूव करेगा। बेसिकली मैं इस सारे पॉइंट से डायरेक्शन की अहमियत पे बात करना चाहूंगा, दैट इन मैनी केसेस एज अ केस ऑफ फोर्स
डायरेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। चलें एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और शख्स है, और मैं इस तरफ बता भी देता हूँ, ये इस तरफ फोर्स लगा रहा है और ये इस तरफ फोर्स लगा रहा है। तो बताएं अब क्या होगा बॉक्स के साथ। फिर जो नेट रिजल्टेंट इफेक्ट होगा कि कौन ज्यादा जोर से पुश कर रहा है या जी पुल जी कर रहा है, एग्जैक्टली। उस पर जो डिपेंड। सेकंड चीज अब हमारे लिए जरूरी है वो है मैग्नीट्यूड, कि अगर हम वैसे अगर कहें तो हम कहेंगे इट विल नॉट मूव, यानी अगर बच्चे से पूछा जाए, लेकिन हम इस चीज में ये देखेंगे कि मैग्नीट्यूड कितनी है, कि कौन ज्यादा फोर्स लगा रहा है। अगर लेफ्ट पे ज्यादा फोर्स है तो राइट पे मूव नहीं करेगा, लेफ्ट पे जाएगा, एंड देन अगेन के डायरेक्शन कौन सी है, एंड सो ऑन। सो मकसद बताने का है कि दो चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एंड दैट मेक्स अप अ वेक्टर। वेक्टर इज अ क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और यूजुअली वेक्टर की यही तारीफ की जाती है, लेकिन जस्ट बिकॉज वी आर अ बिट हाई लेवल, वेक्टर की सिर्फ ये तारीफ नहीं है, वेक्टर की तारीफ में एक और चीज ऐड होती है, दैट इज हेड टू टेल रूल। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी विच हैव डायरेक्शन and it follows head to tail rule, then we term it as vector. There are couple of quantities which have direction, but it does not follow head to tail rule, so we term them as scalar quantity. For example, मैं उसकी example दे देता हूँ। There is a very famous quantity जिसको हम I से लिखते हैं, known as current. It can be a conventional current and it can be an electronic current, depend upon हम किस बिहाफ पे करंट को पढ़ रहे हैं, यानी डायरेक्शन है। कन्वेंशनल करंट से मुराद होगा करंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस, एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट विल बी करंट ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस। कैन यू लेट मी नो कि करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, दो आई हैव hinted before about it. सर करंट का मैग्नीट्यूड तो होता है एम्पेयर्स में मेजर होता है, और करंट की अपेरेंट डायरेक्शन भी होती है, आई थिंक हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो आई थिंक यस। शायद वेक्टर। सो अगर हम जैसे मैंने अभी बात की, कन्वेंशनल करंट की बात की, इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात की, एंड इट सीम्स के डायरेक्शंस की बात हो रही है, लेकिन स्टिल करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। Then we have another quantity known as pressure, which is a ratio of two vector quantity force per unit area vector. So it depends upon two vectors, but unfortunately, it's not a vector; it's a scalar. So why these both things are not scalar? We usually linked it with this head to tail rule. These both physical quantities does not follow head to tail rule. Usually in your physics courses, you have read these sort of formulas. Head to tail rule does not, in head to tail rule, the sum of two quantities can be equal to a total, but it is not always true. There are many possibilities जो भी हम discuss करते हैं. So this is basically, you can think of your MCQ stuff. Current and pressure are scalar, though they seems to be a vector thing. Okay. Okay, next, इसी पे ही जो हमने यहाँ पे बात की अभी वेक्टर रिजल्टेंट की। Why it's not easy? Just a minute. ओके, सो वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? यू रिप्रेजेंट अ वेक्टर विद सिंपल अ लेटर विद एन एरो साइन, जबकि बुक्स में बोल्ड किया जाता है, क्योंकि बुक्स राइटर के लिए बोल्ड करना आसान है, हमारे लिए एरो लगाना आसान है। अगर हम बोल्ड करेंगे तो किताब ये सफ़ा फट सकता है। फॉर अ राइटर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू राइट दिस साइन, सो दे सिंपली बोल्ड इट।
and we termed the vector has a magnitude which is simply this, or sometime can be written like this, and then a direction. And what is the symbol we use for the direction? That is unit vector. So this is the magnitude, this is the direction which we just recently discussed, and then they both makes up a vector. What is a unit vector? A unit vector is a vector in a given direction which has magnitude 1, and the most famous unit vectors are I, J, K, which are unit vectors along x-axis, y-axis, and z-axis. So this is how we can write a vector in components. A is equal to axi plus ayj, where x and y are the components of vector A. For example, this is a vector A. So if we take its projections along x-axis and y-axis, this makes ax and ay. If you take it to equal to theta and we find a cos theta and sin theta, what we get? Ax is equal to a cos theta, ay is equal to a sin theta. And if we find the square of these two things, scaling 1 and 2 and solving it for trigonometric function cos square theta plus sin square theta is equal to 1, we will get this. What is this? This is a the magnitude. So here this thing shows if you have the magnitude and angle theta, you can find the component. If you have the component and you like to find the magnitude, then this is the way to go. And this is the most used formula in our first chapter. For example, if you have 2i plus 3j as a vector and you need to find its magnitude, what you need to do is simply by this formula, square of the components. So first square plus second square, that will be 13 under root, which will be equal to some constant. And if I like to find the unit vector from here, which is usually a very good short question or MCQs. So what is the formula? If I look at here, a vector is equal to magnitude into unit vector. So unit vector will be equal to the ratio of vector to the magnitude. So vector is 2i plus 3j. The magnitude is 13. So this will be your unit vector. So if a vector is given, this is a way to determine the magnitude and this is a way to determine the unit vector. I know this will be basic for some and it might be helpful for some. So just keeping this in mind, I'm trying to cover as much as possible. So if it seems very basic for you, pardon me for that. But just for the sake of completion, I have to go through the things which are there. Okay, so this is how we can determine the magnitude, unit vector, and the vector. So this is the stuff which have been discussed in question 1, and this is the basic which is related to that. So let's move on to the next part, which is direction cosines, question number 2. And as I told you before, this is one of the questions in paper 1, question 1, direction cosines, how you can determine the direction cosine. So direction cosine basically kya hai? It's just simply the cosines of the angle made between the vectors and the 3 coordinate axes. And for example, let's make me 3 coordinate axes. So this is x, for example, this is y, and uh, this is not fixed. You can alter x, y, and z if you like to. So for example, we have a vector here, a in x, y, z plane. X, it is making angle with x-axis as alpha, making angle with z-axis as gamma, and making angle with y-axis as beta. This third coordinate basically is usually in space. ये space में होता है, just like if you uh, point your pen
इन एयर, तो वो तीसरा एक्सिस बनेगा। अब जाहिर बात है वी आर ऑन अ 2D प्लेन, वी कैन नॉट मेक इट ऑन अ थर्ड plane, so that's why it seem like a is part of it, otherwise प्लेन में दो ही हैं एक्स वाई, जबकि जी ये स्पेस में है, जस्ट लाइक पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू, पेन साइड। अब इसमें से अगर आप सिंपली कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गैमा ले लें, तो आपके पास जो है वो डायरेक्शन कोसाइन बन जाएंगे। उसको हम बना कैसे सकते हैं, अभी पहले मैंने अभी कुछ फॉर्मूला लिखा थोड़ी देर पहले, कि आप x इज इक्वल टू एक्स के लिए आपके पास कोस आता है विद अल्फा, y के लिए आप अगर इसको करें तो दैट विल बी आर कोस बीटा, एंड देन z इट विल बी आर कोस gamma, cosines of all the angles and keeping its length to be r। तो आपके पास ये x इज इक्वल टू आर कोस अल्फा, y इज इक्वल टू आर साइन अल्फा एंड z इज इक्वल टू कोस gamma बन जाएगा। तो इसको अगर आप मैग्नीट्यूड स्केयर लें तीनों का, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर, तो you will end up with r square, because cos के अल्फा प्लस cos के बीटा प्लस cos के gamma जो है that is an identity which is equal to 1। so this is a sort of a magnitude formula जो कि हमने थोड़ी देर पहले अभी देखा है। इससे अगर आप वेक्टर बनाएं तो that will be xi प्लस yj प्लस z के, सिंपली पोजीशन वेक्टर। तो इसमें आप वैल्यू दोबारा अगर दर्ज करना चाहें तो r cos अल्फा i प्लस r cos बीटा j, r कोमा भी ले कॉमन भी ले सकते हैं। तो बेसिकली सिंपल आपने डायरेक्शन को साइंस के लिहाज से उसकी पोजीशन वेक्टर बनानी है, आपने उसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला देना है, एंड यू जस्ट नीड टू कंपेयर इट विद द गिवन स्टफ। अब इसको मैं सिंपलीफाई अगर करना चाहूँ, दिस इज आर वेक्टर, दिस इज आर मैग्नीट्यूड, अगर मैं इसको यहाँ पे लाके डिवाइड कर दूं जस्ट लाइक दिस, आर वेक्टर ओवर आर मैग्नीट्यूड, दिस विल बी सिंपली what is being written upside। Would anyone like to define what is this on the left hand side? सर आर यूनिट वेक्टर। R unit vector. Excellent. So this is the definition of R unit vector. So R unit vector is basically cos alpha I plus cos beta j plus cos gamma k। और अगर हम इसको डायरेक्शन को साइंस के साथ सिंपली कंपेयर करें, so the first will be your cos alpha x over r। So this is a unit vector, and यहीं से हम यूनिट वेक्टर को कंक्लूड करेंगे। ये आपका वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड है, और यहाँ से आप डायरेक्शन को साइंस डिफाइन करते हैं। इसको आप अल्टरनेटिवली यूं भी लिख सकते हैं, कोस अल्फा इज इक्वल टू एक्स ओवर आर, कोस बीटा इज इक्वल टू वाई ओवर आर, एंड कोस गैमा इज इक्वल टू जेड ओवर। सो दिस इज इन अदर वे ऑफ राइटिंग कोस डायरेक्शन को साइंस। अब इसमें आर का फॉर्मूला भी आप इनपुट कर सकते हैं, विच इज एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर, ये बुक में हुआ है। यू जस्ट सिंपली जब आप गो थ्रू, मकसद भी यही है कि जब आप बुक को रीड आउट करें तो उसमें से जो पॉइंट्स हैं वो आपके क्लियर हो चुके हों। और इनको हम एल एम एन भी लिख सकते हैं, एल एम एन। सो डायरेक्शन को साइंस में आपने सिंपली एक्स वाई जी को डिफाइन करना है बेस्ड ऑन द डायग्राम, वहां से आपने मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बनाना है, पोजीशन वेक्टर की बेस पे आपने यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बनाना है, और दैट्स इट। और ये आप अल्टरनेटिवली इसको यूं लिख सकते हैं, जो कि अगेन आपको वही चीज देगा जो कि पहले आपके पास है। ओके, सो दिस इज अबाउट डायरेक्शन को साइंस। द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन 3, spherical polar coordinates क्या होते हैं, एंड द थिंग विच वाज आस्क्ड अगेन इन पीएमएस 2023 के हम कार्टेशियन और spherical coordinates को कैसे लिंक कर सकते हैं। So anyone like to tell me about what is mean by spherical polar coordinates? Maybe we could simply take it from the textbook, as my drawing is very good. Anyone like to add about spherical polar coordinates?
Okay, so based on the symmetry which we have different sort of coordinate. For example, ये जो simply x y z है जो हम पढ़ते हैं, these are the Cartesian coordinates. This y1, this y1, this x1 and this z1. और हम अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करें जिसमें स्फेरिकल सिमेट्री है, फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ अर्थ। हमारी अर्थ जो है वो स्फेरिकल सिमेट्री रखती है। अगर आप कोई सिलेंडर को डील कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो सिलेंडर हैज अ सिलेंड्रिकल सिमेट्री। तो उसकी बेस पे अगर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स अप्लाई करें, सो दैट प्रॉब्लम बिकम्स क्वाइट अ डिफिकल्ट टू डू। सो फिर हम क्या करते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं फ्रॉम वन सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स टू अनदर सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स। एंड द वे ऑफ डूइंग, उसके पीछे है मैथमेटिक्स है जो कि यहाँ पे डिस्कस हुई हुई है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग कि ये है क्या, इनकी रेंज क्या होती है इनके कोऑर्डिनेट्स की, एंड हाउ वी कैन गो फ्रॉम वन कोऑर्डिनेट टू द सेकंड कोऑर्डिनेट। तो ये देखिए, ये आपके सिंपली एक्स वाई जी हैं जो भी हमने पढ़े वेक्टर्स में। जब हम सिलेंड्रिकल की सॉरी स्फेरिकल की बात करेंगे, सो दे आर रो थीटा फाई। हम सिलेंड्रिकल में जाएंगे तो जी आ जाता है इधर, लेकिन फिलहाल हमारा स्फेरिकल के साथ ताल्लुक है। सो अब रो बेसिकली क्या शो कर रहा है, ये बेसिकली रेडियस को शो कर रहा है, द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट अंडर कंसिडरेशन। थीटा इज द एंगल मेड विद एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, सो द एंगल मेड विद एक्स एक्सिस। आप अगर यहाँ पे x ले लें, जैसे मैंने डायग्राम में x लिया, तो ये एंगल फिर इसके साथ बन जाएगा। एंड द फाई इज द एंगल मेड विद द z एक्सिस। ओके, सो दीज आर the routine which we follow in spherical polar coordinates. The theta is the angle made with the x axis as usual, और वो अगर आपका x कोऑर्डिनेट इधर होगा जहां पे इसने y लिया हुआ है, तो वो जारी बात है आपका लॉन्ग x एक्सिस बन जाएगा। सो इट्स नॉट डिफरेंट कि अच्छा नीचे क्यों बना हुआ है, सिंपली नीचे इसलिए बना हुआ है बिकॉज x एक्सिस इज लॉन्ग देयर। एंड देन वी हैव z एक्सिस, और z एक्सिस के साथ जो एंगल होगा दैट इज फाई। ओके, सो अब इनके साथ जो रिलेशन है वो हम डिराइव कर सकते हैं। इसकी जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने बताया कि इसकी रेंज क्या है, आपको पता होना चाहिए कि हम किस एंगल को किस रेंज तक लेके जा सकते हैं। ओके, दीज आर थ्री, द कोऑर्डिनेट सिस्टम वो थ्री dimensional space in which position of a point specified by three numbers such as radius, distance, polar angle and azimuth angle is known as spherical polar coordinates। उसमें उसने डिफाइन किया हुआ है इनको, रेडियल डिस्टेंस को डिस्टेंस गिवन बाय द पॉइंट ऑफ फिक्स ओरिजिन जो कि सिंपली आर है। देन वी हैव पोलर एंगल्स विच इज जेनिथ डायरेक्शन कह लेंगे, या जी डायरेक्शन जिसे हम कहते हैं, this is given by theta. And then we have the azimuthal angle which is given by the phi. It is measured from the fixed reference direction on that plane. And the most important thing is the relationship कि आप उसको किस तरह रिलेट कर सकते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के साथ। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपली जैसे आप कंपोनेंट्स में रिजोल्व करते हैं, कंपोनेंट में रिजोल्व करने का मकसद ये होता है कि आप उसको सिंपलीफाई कर सकें। तो यहाँ पे अगर हम कंपोनेंट देखें, सो दिस इज अ पीजी and this is PZ, this length, which is equal to P sine phi. Why it is equal to P sine phi? Because this is a phi angle, and phi angle के सामने आपके पास परपेंडिकुलर होता है, और आपका ये हाइपोटेनियस है। और साइन फाई का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। सो इट विल बी द अननोन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस इज रो, सो एक्स विल बी इक्वल टू रो साइन फाइव, जो उसने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, आप उसको एक स्टेप करना चाहें, यू आर मोर देन वेलकम। इसी तरह अब अगर आप कोस फाइव वाले पे आए, विच इज बेस ओवर हाइपोटेनियस, सो दिस इज योर बेस, दिस इज योर हाइपोटेनियस। सो जब आप उसे इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे कोस फाइव लेके, तो यू हैव रो कोस फाइव
विच इज गिवन हेयर, एंड पी जी इज इक्वल टू ओ क्यू, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि ये जो पी जी है ये इस ओ क्यू के बराबर है, बिकॉज दीज आर the opposite side of a parallelogram, or you can say it a rectangle. So ओ क्यू भी किसके इक्वल हो जाएगा, रो साइन फाई के। अब आपने सिंपली क्या करना है, एक्स वाई जी के इक्वल लिखना है। अब एक्स क्या था हमारे पास, लेट मी रेज इट। ओके, सो हमारे पास ये एक्स है, हमारे पास दिस इज योर वाई एंड दिस इज योर जी, द डिस्टेंस अलोंग z एक्सिस, द डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस एंड द डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस। अब इसमें एक स्पेस में है, so it might seem to be odd, लेकिन it is straightforward। अब ओ क्यू को आप कंपोनेंट में लें, ये जो ओ क्यू है आपके पास, तो एक आपके पास x बनेगा और एक आपके पास y। इट्स लाइक x इज इक्वल टू रो कोस थीटा, y इज इक्वल टू रो साइन थीटा, और इनकी वैल्यू जो है आप इसके साथ मर्ज कर लें, विच इज p साइन फाई, एंड देन यू हैव p cos phi. So this is your three polar coordinates in comparison with spherical polar coordinates, ठीक है। ओके, लेट मी लास्ट टाइम रिपीट इट। सो दिस इज ओ क्यू, मैं इसे यहाँ पे शो कर रहा हूँ, दिस इज ओ क्यू। ये ओ क्यू के साथ आपके वाई और एक्स लिंक करते हैं, जो कि कंपोनेंट की शक्ल में। तो ये किसका कंपोनेंट बन गया लॉन्ग वाई एक्सिस, और एक इसका कंपोनेंट बन गया लॉन्ग एक्स एक्सिस, जिसकी वैल्यू हमारे पास पहले ही रो साइन फाई मौजूद है पूरे की। हम जब इसे रिजोल्व करेंगे तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग कोस थीटा आएगा और वाई एक्सिस के लॉन्ग साइन थीटा आएगा, रो साइन फाई वैसे ही रहेगा, और जी जो कि हमारा वैसे ही रो कोस फाई के बराबर है बाय दिस डेफिनेशन, उसको हमें रिजोल्व करने की जरूरत नहीं। तो ये आपके पास थ्री कंपोनेंट। सो ये क्वेश्चन थे जो पीएमएस में, जैसे मैंने अभी मेंशन किया, लास्ट टाइम आए, और आपने उसमें डायरेक्शन को साइंस की तारीफ करनी थी, डायरेक्शन को साइंस के लिए फॉर्मूले बनाने थे, वेक्टर, पोजीशन वेक्टर का, मैग्नीट्यूड का और यूनिट वेक्टर का, और उसके बाद आपने इनकी बेसिक डेफिनेशन बता के यू हैव टू क्रिएट अ लिंक, how you can go from one coordinate to another. So if you have x, you have y, and you have z, then you can determine these coordinates. Vice versa, if you have theta and phi, so by just determining cos and sine, you can go to x, y, and z. One thing which can be add, which is not here, and I would like you to comment on it. Let me take you to the slides. Okay, so these where we were. ओके, हमने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा कि अगर आपके पास आर है, दैट इज एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, मतलब अगर आपने एक से दूसरे में जाना है जबकि एक्स किसके इक्वल है, या बेटर ए एक्स स्केयर, ए वाई स्केयर, ए स्केयर, फिर ए एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। सो यू कैन मूव फ्रॉम, if components are given you can find a magnitude, if magnitude and angle is given you can find the components। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला सेट, okay, I just said कि if we have a vector axi plus ayj, and you need to determine this ax or ay, we know just to do cos theta and do sin theta, but if you need to do vice versa, so this is the formula,
So if the components is given, you can find the magnitude. If you need to find the component from the magnitude, this is the way to go. अब जो भी हमने formulas पढ़े हैं, x is equal to रो, इसको यूं भी लिख सकते हैं ताकि आप, क्योंकि हमारे पास ये था जिसको हमने रिजोल्व किया कंपोनेंट्स में, ये फिक्स है। इसके लिए कोस थीटा आ जाएगा, इसके लिए साइन थीटा आ जाएगा, और इसके लिए हम वही यूज करेंगे। तो ये तब यूज होगा जब हमारे पास रेडियस है, फाई एंड थीटा है। व्हाट इफ वी आर गिवन x, y and z, and we need to determine, for example, theta and phi. So how we shape these formulas, just like we have this formula for magnitude above. Can we find this sort of formula? Any hint कि कैसे करेंगे हम? ओके, सो अगर हम फाई की बात करें तो दैट इज क्लियर, कोस फाई इज इक्वल टू जेड ओवर रो। तो ये आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं अगर आपके पास जी कंपोनेंट दिया गया है, और आप उसके रो से करके उसको निकाल सकते हैं। बाकी उसी तरह आप इसके कंपोनेंट की स्केयर मैग्नीट्यूड ले लें, सो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर। सो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास रो स्केयर साइन स्केयर फाई कोस थीटा स्केयर प्लस रो स्केयर साइन स्केयर फाई साइन स्केयर थीटा प्लस रो स्केयर कोस स्केयर फाई। सेम मेथड ऑफ डेरिवेशन जैसे हमने पहले किया। अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे रो स्केयर साइन स्केयर फाई कॉमन है, और जो बचेगा दैट इज अ वेरी famous identity cos square theta plus sin square theta, which is equal to 1, and then we have rho square cos square phi. So ये 1 हो गया। जो आपके पास बचा है that is another identity, same identity with azimuthal angle, so it will become 1. So what you have, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, रो स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर, और अदर वे राउंड आप इसको स्केयर रूट ले लें और इसको आप सिंपली कंपोनेंट ले लें। सो दिस इज not part of your book, but you can take it as a part, कि अगर हमारे पास उसके कंपोनेंट दे दिए जाएं, जैसे भाई ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो आप उसको उससे रिलेट कर सकते हैं। आप इनको थीटा और फाई की शक्ल में भी लिख सकते हैं बाय पुटिंग आउट द वैल्यूज। सो दिस बेसिकली completes your question 3, which is simply about writing bit about spherical polar coordinates. इसमें मैं एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूंगा जो कि इधर मेंशन नहीं है, एंड आई विल guide you on it once you are done with it. So let me put you in a question and let's see आप इसे figure out कैसे करते हैं. And that will be very important question for the MCQs, of course. Okay. So question is what, अभी कोई बताना चाहे तो very good. What is the domain of theta, rho, or you can say r and phi? ये जो रेडियस है, क्या उसकी डोमेन बेसिकली मतलब होता है इफ देयर इज सम लिमिटेशन टू द इनपुट, या आप हर तरह की रियल वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है सो दैट विल बी थीटा, एंड अगर ये हमारा जी एक्सिस है तो दैट विल बी फाई। सो द क्वेश्चन इज देयर limit to these values of theta and phi, or we can take whatever we like, and these values have some sort of range.
0 से pi or 0 से 2 pi, you need to look out for. Or maybe someone like to tell now. Other way around, we can take it as a MCQ's assignment for tomorrow's class. You need to figure out what is the angle range for या एंगल लिमिटेशन फॉर थीटा एंड फाई. रो तो हर कोई भी वैल्यू हो सकती है. इट्स अ अंडरस्टूड थिंग, बट थीटा एंड फाई हैव सम लिमिटेशंस. Okay, so this concludes our third question, and then let's move on to the next one, which is multiplication of vectors. How vectors can be multiplied? So there are three ways, or maybe one can say the two ways. First is the scalar multiplication of vectors, and then the vector multiplication of vectors. Again, this vector product question is part of PMS past papers. So the scalar multiplication of vector is basically you multiply by scalar n with a vector a, and the vector multiplication is basically you multiply a vector with a vector. So what happen, you multiply with a scalar with a vector, its magnitude changes as well as direction depend upon what is the value of n. For example, if n is 2, so what will be happen? Anyone like to add? If n is 2, what will happen to vector a? सर डबल हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड. Okay, its magnitude doubles. If n is -2, what will happen to a? सर मैग्नीट्यूड डबल बट ऑपोजिट डायरेक्शन. Yes, it will double, but in an opposite direction. Okay, there is another specific case of this topic, that is dimensionless scalar. I used to term it as ds with a vector a. For example, I multiply mass with velocity. Now mass is a scalar, as we are in the topic scalar product, scalar multiplication. And if we multiply it with a vector, what will happen? We will get a new physical quantity, that is momentum. So this n is dimensionless scalar. It does not have dimension. It's a simple number, and number has no dimension. But if you multiply a dimensional scalar, scalar which have dimension. Dimension is basically, you can simply say it has unit. Mass has a unit of kilogram, and you multiply it with a vector, it usually result in a different physical quantity. So this can be a good MCQs. Its length will not double, its direction will not change. It will simply turn into a different physical quantity, which is momentum in our case in this example. Okay, so this is basically scalar multiplication with a vector that has two sub types, dimensionless scalar and dimensional scalar. अब इधर आ जाते हैं vector product पे. If you multiply vector with a vector, we usually have two cases. One is simple, you multiply a vector with a vector and you have a vector quantity, but there are some special cases when you multiply a vector with a vector, but you get a scalar quantity. So based on what will be the sign here, we have two possibilities. So one will get this sign and one will get this sign. So based on this, vector product is also known as cross product. Scalar product is also known as dot product, depend upon the sign जो उसे डेडिकेट किया गया, क्योंकि एक ही साइन अगर देंगे तो दैट विल क्रिएट अ मैस कि इसमें हम क्या करें. ओके, so these are basically our question 4 and 5. This is question 5 4, and we will start from here tomorrow.
question 5. So this part, I will share the relevant data for it. This is not part of your book, but it is important for MCQ, especially this dimensional wala part and scalar and vector, and then the example of a vector, which will be torque, and then we will, and that will conclude our this outline part. So आज हमने जो किया है, we have concluded this vector part, and we will start from this dot and cross wala thing from tomorrow, just keeping that it is our first class, but we will keep pace up so that we can complete and especially assess you for this time by time. Okay.